So this is Game on Hay. We're discussing, of course, Australia's victory in the World T20 in Dubai tonight. A comprehensive victory by a side that has come good at just the right time and progressed beautifully through the tournament. New Zealand, though, were worthy opposition. They earned their place in the final. And although they started, should we say, with a bit of a struggle in the opening overs of tonight's game, their captain, Williamson, played the most superlative innings. Sana, doesn't get much better than that. We talked about him earlier today as one of these people who is talented, whatever the game, whether it's Test cricket, 50 overs, 20 overs. And he had to do something very special tonight to rescue his side. And definitely he did. He was quite special. And the best part about his innings is he played all the cricketing shots. He never looked to overhit the ball. He was dropped at 21, but after that there was no looking back. I think after the drop catch in next 10 deliveries, he scored 36 runs, and that's the skill and execution of a great player. Absolutely. Well, again, let's get the left wing involved and see what they made of it. जी राशिद भाई, विलियमसन के बारे में अगर हम बात करें, अजहर भाई ने सुबह भी बात की कि सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, पर इस तरह की इनिंग्स T20 में हमने उनसे पहले देखी नहीं कभी. जरूरत पड़ गई थी लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की है. जिस तरह से हमने कहा था कि इनके इर्द गिर्द इनकी टीम चलती है, ये खड़े रहते हैं और दूसरे प्लेयर खेलते हैं, और ये आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, इसलिए ये दुनिया के टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर आते हैं. बाबर आजम, विलियमसन, विराट, रूट, ये सारे टॉप प्लेयर्स हैं हर फॉर्मेट में. तो विलियमसन एज ए बैट्समैन कॉम्पैक्ट जो प्लेयर हैं यही कहलाते हैं. मतलब इनके साथ ये हुआ कि आज इन्होंने परफॉर्म किया लेकिन इनका कोई पार्टनर नहीं मिला अच्छा. डैरल मिचेल अगर साथ खड़े हो जाते, या फिलिप्स अगर खड़े हो जाते, या निशम कोई भी एक 50 रन करता, ये 200 रन कर देते. खुद भी 2 ओवर पहले ये आउट हो गए. बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है उन्होंने. पहले बैटिंग करने का थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ है इनको, न्यूजीलैंड की टीम को. टॉस बहुत मैटर करता है, लेकिन तो क्लास शॉट खेली है इन्होंने, इसीलिए इनको ये मतलब दुनिया का टॉप प्लेयर कहा जाता है. बहुत ज़बरदस्त बैटिंग और इतना पावर है राशिद भाई. जो ऋषभ पंत के 2 छक्के हमने देखे सिंगल हैंडेड, वो छोटा ग्राउंड था. लेकिन ये डिस्प्ले कर रहे हैं ना, ये इन्होंने क्या है, फिर गैप में प्लेसमेंट किए. लेकिन ये शॉट मारी जिससे आउट भी हो गए थे. प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इनकी. प्लेसमेंट बहुत अच्छी है. अजहर भाई, यही बात मैं आपसे भी करूंगी कि पावर हम कहते हैं कि ये उस तरह से यूज़ नहीं करते, पर वैसे जान इतनी है कि बहुत बड़ा ग्राउंड था, लंबी 78 मीटर्स की भी बाउंड्री, वहाँ पे भी सिंगल हैंडेड छक्के इन्होंने आज लगाए. देखिए टाइमिंग बहुत अच्छी है उनकी प्लेसमेंट टाइमिंग की लाजवाब है. मतलब आप देखेंगे उनको पता है कि गैप किधर है, और पहला उन्होंने बाउंड्री खेली वो निकल के खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा. और उसके बाद जिस तरह उन्होंने मिचेल स्टार्क के ओवर में जो खेले हैं, एक एच था, उसके बाद दूसरा भी अगर आप देखें कि थर्ड मैन के ऊपर से अपने बैट को पूरी रिस्ट को उन्होंने घुमाया है और वो थर्ड मैन के ऊपर से गया है. उसके बाद उनको पता था, उन्होंने 4 फील्डर ऑन साइड पे लिए, उन्हें पता था कि बॉल कहाँ होगा, तो ऑफ स्टंप पे आए और फिर फ्लिक करके छक्का मारा. तो आउटस्टैंडिंग इनिंग. और उसके बाद फिर अगला बॉल फिर उन्होंने जो है वो पॉइंट के ऊपर से खेला. तो मतलब आर्ट ऑफ बैटिंग आप इसको कहेंगे कि इतना मतलब उनको पता था फील्डर कहाँ है और किस तरह मैंने अपना कहाँ पे गैप है और किस तरह खेलना है. वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर मतलब जो है ना ऑल फॉर्मेट के, ना सिर्फ इसमें. और जिस तरह अपनी इनिंग्स को उन्होंने पेश किया, हम बात कर रहे थे उनके स्ट्राइक रेट की, आज जिस तरह उन्होंने पेश किया कि पहले 15 बॉलों पे 15 रन से, और उसके बाद एकदम से जो है ना 30 बॉल्स पे 50 उन्होंने की, तो 15 बॉलों पे 35 रन किए. दैट शोज द क्लास ऑफ द बैट्समैन. बिल्कुल, बहुत सी क्लास शो की केन विलियमसन ने, और उसके बावजूद न्यूजीलैंड अपना मैच जीत नहीं सकी. हम फॉल ऑफ विकेट्स पे जाते हैं और साथ उमर भाई को भी लेके आते हैं. जो ओवरऑल जो विकेट्स गिरी हैं उसके ऊपर आप प्लीज बताएं, कुछ तबसरा करें. ज़बरदस्त बॉल उसने किया, तो सब रूम बनाने की कोशिश की, पीछे हटे, और आई थिंक स्लोअर वन किया, पेस आई ना उस पर. तो ये जिस तरह अजहर भाई बात कर रहे थे ना कि जैम्पा ऐसा बोल रहे हैं ना कि ये विकेट टू विकेट बॉल करता है और करीब बॉल करता है ना, तो इसको अगर क्रॉस द स्टंप आप खेलोगे, जिस तरह क्रॉस जाओगे ना, तो इस पर आपके आउट होने के चांसेस ज़्यादा है. तो वही गप्टिल ने भी किया, क्रॉस खेला. अगर बजाय वो बॉल करीब था, बजाय सामने खेलते ना, तो मैं भी कि वो उसको बाउंड्री के लिए ले जाता. ये और जिस ओवर की मैं बात कर रहा था, स्लो रन नकल बॉल किया था, बड़ा ज़बरदस्त उसने अपने पेस को यूज़ किया. और इस टाइम पे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था फिलिप्स, लेकिन उसने अपने वेरिएशन को स्लो बॉल किया.
बिल्कुल और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में. अगर हम इसके बाद उनकी बॉलिंग कार्ड की भी तरफ जाएंगे, डेविड, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया's bowling, do you think this pitch was still 170 or they really restricted them in under 30 runs under the past score? Yeah, I thought the power play was key, 32 for 1, and New Zealand never got going. Guptill never timed it. So whether there was some sort of something in the pitch early on where it was gripping, but certainly, I mean, Hazelwood's figures are extraordinary given the context of a final, the way he bowled at the top there, 3 for 16 off 4 overs. 18 dot balls. 18 dot balls. I mean, that's just 3 overs of dot I mean, balls. that's just unfair. It's as simple as that. I mean, Stark's figures were hammered by Williamson. I mean, that was an extraordinary piece of batting, and the rest are. I mean, forget Marsh's 1 over. The rest are about normal for the circumstances. But I mean, the two things that sort of stand out are Hazelwood and Stark for the opposite reasons. Stark difference. Thank you very much. Yeah, just one lesser difference. I love it. Great. That is the pun of the tournament. And just the way things went at the start. I mean, this is Hazelwood's contribution. Obviously, the wicket of Mitchell was important. He got him just that little feathered edge through. But the restriction at the start just put them under pressure. I mean, I thought they did really well to get so many. I thought at one stage, 150 is going to be it. But Hazelwood's contribution outstanding. Viv, I know we're watching the bowling at the moment. I just want to get a word from you, or more than one word actually, on Kane Williamson, because as one of the world's greats from previous era, he is one of the greats of this era. Well, to be fair, you hear that term being used, that form is temporary and class is permanent. Certainly he came to the party tonight as captain. He was a little bit underdone in terms of runs before that. But then when you look at maybe the next highest score is 28 from Guptill, and 18 coming from Glenn Phillips and Nisham, 30 not out. So, which means that he wasn't really supported with the bat today from his players. When he decided to come good, the other guys decided they were going to have a little rest. And that didn't pay any tribute to the way in which he played tonight. I think he should have had a little bit more support. We hear the panel spoke earlier about maybe the power play. I think they were rather sort of a sluggish in the power play, and that contribute to the fact. But normally, I mean, we all spoke before the game about, and even in Dubai they were talking about being brave in that power play, because we'd seen 166 and 176 lose. There was the feeling that another 10, 15 needed to come. Therefore, you need something from the start. You need a bigger platform at the start. As I said, Guptill didn't find his timing. Mitchell struggled. He was out in the 4th over for they never got that start. But is that because there was a bit of grip in the pitch? Is it because they bowled well? Is it a bit of both, or what is it? I think it's a grip, because every team struggles. So far, Pakistan, their best first 6 overs runs were like 47. And that trend is going on with most of the team, because when you bowl wicket to wicket, it's not coming to the bat. Even the spinners can have hold and then a little bit spin. The first 10 over is the difference, and that is what we call it the toss impact. After 10 overs, you see pace of runs coming up, and I think Guptill today was stuck in there, 35 balls and 28 runs, and then no one actually picked the pace with him. Then Phillips 18 of 17 ball, then even Safford in the end 8 runs in 6 ball, where you actually need like 6 means 1 over. In the end it goes for like more than 15 runs. Until 17 overs they were looking for like 85, 80, big score, like reaching 90. And I think Stark was really well in the end, the last over. And I think Stark, if you look at Stark's bowling actually, he must have learned a lesson. If you have a pace of 145 plus, then you can't bowl without third man back. So I think straightforward game with nothing much up and downs. It's like smooth towards Australian.
I think if No. Bas. आकिब भाई टूर्नामेंट हमारे शो के शुरू में मसला हुआ एनिवर्सरी का छह ओवर खेले कपिल ने 28 रन बनाए. It's just remarkable. When you look at Hazelwood figures, man, it's ridiculous at this level, T20. You know, 4 overs, 16 runs, 3 wickets, 18 dot balls. This must be the performance. That's what we're talking about. That is just ridiculous in terms of what he would have achieved in a very high pressured match. A final for him to come out with those figures, man. For me, he it's was the special, man. yeah. For me, he was the man of the match on a pitch where it's almost 350 runs. The reason being was scored. Gupta almost 35 balls and 28 runs. 6 ओवर 28. मैं आ जाऊं. Hold on a second. Can we double check? Hands up, all those who would like Azhar to say his piece now. Is it okay? Thank you very much. Thank you very much. Had enough. Bas. Right. Speak. Permission granted. Okay. No, I think I think credit goes to Australian bowler. उन्होंने 43 डॉट बॉल किए हैं. उसमें हम जो बात कर रहे थे कि ऊपर से जाके आप थोड़ा सा खुला खेलें. अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग को देखें ना, अब आप देखें नीशम 5वें नंबर पे ऑलराउंडर है. देन उनके बाद जो है आज कॉनवे खेले नहीं है तो आप उनका विकेट कीपर जो है वो 6ठे नंबर पे है. उनकी बैटिंग में उतनी डेप्थ थी नहीं. ठीक है, उनको कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलते हैं, इसमें उनकी बैटिंग में डेप्थ नहीं है. वो ये अलाउ ही नहीं करता, उनकी बैटिंग लाइन उनको अलाउ ही नहीं करती कि वो अप फ्रंट जाके वो जो है ना वो खुला खेल सके उस तरीके से. गो के मैंने जो बात की कि बॉल आ नहीं रहा था, उस वजह से भी शॉट नहीं लगे. लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो ऑस्ट्रेलियन की जो बैटिंग लाइनअप है उनमें फायर पावर नीचे तक है. मतलब हमने देखा मैथ्यू वेड नंबर 7 पे आ रहे हैं, उसके बाद कमिंस भी वो खेल सकते हैं. तो उनके पास ऐसे प्लेयर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर, जो हम जैसे हम बात करते हैं इंग्लैंड की बात करते हैं तो उनके पास ऐसे प्लेयर हैं. अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऐसे जो हमारी ऐसी टीमें हैं उनके पास वो वाली फायर पावर नहीं है. तो वो इस तरह इनका यही होता है कि गेम को लंबा करें, विकेट इन हैंड करें और एंड में जाके हम जो है ना हमारा एक आधा पावर बैट्समैन है उससे हम रन्स करें. जबकि ये दूसरी जो टीमें हैं ये डिफरेंट लेवल की क्रिकेट खेल रही हैं. इनका माइंड सेट डिफरेंट है कि इन्होंने अटैक शुरू से अटैक करना है. अब देखें पहला बॉल आके खेला दोनों मैचों में मिच मार्श, उसने आके छक्का मारा तो इंटेंट शो करता है क्योंकि उनका इंटेंट भी है और देन उनकी जो फायर पावर है वो भी उनको अलाउ करती है कि वो जाके इस तरह की क्रिकेट खेल सके. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात. न्यूजीलैंड इसीलिए चेस बहुत बेहतर कर रहा है पर टारगेट सेट करने में प्रॉब्लम आई है. एक और बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ना सिर्फ फाइनल में, ज़ैम्पा द लेग स्पिनर 4 ओवर्स में 26 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया. We'll also look at Zampa. He's been so consistent throughout the tournament. I think he's been one of the best of the leg spinners. That's right. And if you look back at the semi-finals, where the spin, I mean, just to use the English example of Rashid, wasn't at his best. So the fingers may be a little bit nervous. I don't know. I mean, it's one of those things that happens any day. But I thought Zampa today hit his lines, hit his lengths very well. He's got his varieties, picks his wickets up. I thought that was a good performance. Yeah, you hear the other members of the team would speak of Zampa, Captain Finch, when he said that he's a guy who's pretty confident about what he does. He doesn't seem to have any fear, and he's been just great throughout this whole tournament in itself. Especially when sometimes you have runs being scored at a rapid rate, he will come and basically put a stop to it, and more so than anything else, maybe taking a prize wicket or two. Yeah, you got the one today, 1 for 26 off 4, which you'd take very nicely as Every a captain. You know, get me that every time, you'd be happy with it. You know, he's very accurate. Reads the pitch and then staying in the stumps where he is based. I think the most accurate leg spinner I have ever seen. And you see, you can't play him on a back foot. You know, you can play him on a back foot for single. You can't have he hardly bowl any short ball, so you can come back and hit a pull shot or cut shot. You know, his length is so crucial. So he asks batsmen to come forward. You know, asking question all the time. And whenever he's short, also, you can see that there's a plan. Because sometimes
You call it the little Slider. slider. So by the time you pick the bat up, he's already through your defense, you know. And he's Because of class his on. height, his trajectory is very low also, so it's not very easy to get under him also. No, he's I think actually I've seen him in the past, and I've always felt that he wasn't quite at his best. But in this tournament in itself, we saw what he can produce. Yeah, indeed. Okay, well, actually, as we said, apart from the stark performances, the stark contrast we had earlier, Mitchell Stark's figures, which were not ones he will look back on fondly, everything else in that Australian attack was pointing towards keeping New Zealand under control. That's how it proved, and of course it meant the target was very gettable when Australia chased. We've got lots more to talk about. We'll be right back with you yet again after this break. For now, though, it's Game on Hay.